Hello everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself, Aishwarya Saxena, and today in the series of C language using DevC++, we are going to start with the lecture number 11. I have already uploaded lecture number 12. I have already uploaded 11 lectures in this series, and this is our program 11, lecture 12. As the first video of the series was the installation process of DevC++. So, ये अपना 11th program है और we have already seen 10 programs in this series और आपने I hope वो videos देखे होंगे. So here, as we were working on the if-else concept, I'm going to illustrate some more examples of if-else for the convenience of students. So our today's question is write a program to input age of a person and check if he is eligible to vote or not. So we have to make a program here, and for that we have to check something. We have to make some conditions. So we will use if else, and we have to check that if the person is eligible to vote or not. So it's very simple, as you all know. The condition of voting is that a person should be of age equal to 18 or greater than 18. So we will code for that, and watch this video till the end because I'm having some assignment for you today. So watch it till the end, and you all are requested to please comment your answers. आप लोग कमेंट नहीं करते हैं आंसर्स का, so it's not a good habit. अगर आप आंसर कमेंट करेंगे, so we can see that how much you are performing well, and आपको भी इंटरेस्ट रहेगा, आपको भी पता चलेगा कि आपका आंसर सही था कि नहीं था. तो मैंने कुछ असाइनमेंट्स पिछले क्वेश्चंस में दिए थे और कुछ लोगों ने किया है कमेंट, कुछ लोगों ने नहीं किया है, आते हुए भी आप लोग नहीं करते हैं शायद. सो प्लीज कमेंट करा करिए, उससे आपको पता चलेगा और के आंसर्स भी आप देखते हैं और आपका सही है कि गलत, हम लोग डिस्कस भी करेंगे विद नेम कन्वेंशंस. सो आज का वीडियो भी लास्ट तक देखिएगा जरूर, क्योंकि इस वीडियो में भी कुछ असाइनमेंट है आपके लिए. यहाँ हम लोग चेक करने वाले हैं सबसे पहले तो कि क्या एज पर्सन की है. हम लोग एफ पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड टू क्वेश्चंस ऑन एफ एंड दिस इज द थर्ड वन. सो एज की जो कंडीशन है वो हम लोग यहाँ यूज करेंगे, और उसके लिए हम लोगों को एज इनपुट लेनी होगी. सो आई एम टेकिंग एज एज अ वेरिएबल एंड printf enter age of a person and age of a person, and then we will scanf mod d ampersand age. हम वेरिएबल स्कैन करा लेंगे. अब हम अपनी कंडीशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे. इफ age is greater than or equal to 18, then the person is eligible to vote. Okay, printf person is eligible to vote. And अगर ये condition false हो जाती है, in the else case we can print person is not eligible to vote. So that's all for this program. Let's run it. Okay, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है. We have missed the semicolon, and it is very essential, as each and every statement of C language program terminates with a semicolon. So let's run it. Now we are having the console here, our output window. So enter age of a person, let's say 56. So the person is eligible to vote, as our condition is greater than or equal to 18. So if the condition is false, that means if the age of a person which we are giving input is less than 18, say 15, so the person is not eligible to vote. I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्रोग्राम समझ में आया होगा. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपका असाइनमेंट है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप
एक करेक्टर इनपुट लेंगे एंड यू हैव टू चेक इफ द करेक्टर इज वॉवल और कॉन्सोनेंट। करेक्टर वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, ये आपको चेक करना है। इफ एल्स का क्वेश्चन है, इफ एल्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे एंड आई वांट द कमेंट्स, जिससे आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ साथ सारे प्रोग्राम रन कराते रहा करिए आप लोग, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, बट फॉर दैट आई नीड कि आप लोग कमेंट करें। Okay, so thanks for watching. Subscribe the channel and hit the like button. Share with your friends and don't forget to comment the answer. See you in the next lecture.